Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 5th of July. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. Also students, if you are new here, do subscribe to us. We are a one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives and neighbors. In this video students, we will be talking about Niti Aayog that has launched the chemical industry powering India's participation in global value chain, right? This is the report that has been released. Then DAC has approved 1.05 lakh crore indigenous defense procurement. Then India, Australia, they have signed a pact for the joint undersea surveillance research, and India established the first WOAH recognized EDFC in Meerut, UP. All these things and many more will be discussed here, so stay tuned with us till the end. If you are new students, do remember that we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students. Niti Aayog has launched chemical industry powering India's participation in the global value chain. Now the question can be asked, is this report released by which organization? It is released by Niti Aayog, and this report is highlighting the India's chemical sector. It is highlighting the opportunities and challenges in the chemical sector, and it is also outlining a path that will position our country India as a global leader in the chemical sector. This report was launched by B.V.R. Subramaniam, the Chief Executive Officer of Niti Aayog. Then, according to this report, India is currently placed at 6th largest and Asia's 3rd largest producer of chemicals. Let me show you here. It's not mentioned. Let me show that our country is the world is the 6th largest producer of chemicals, and in Asia we are at the 3rd position, right? These chemicals includes your various materials that are chemicals that are used in the industries, pharmaceutical sector, textiles, automotive and agriculture sector. Apart from this, the share of India in the global value chain stood at 3.5% with a chemical trade deficit of $31 billion in 2023 that reflects the country's heavy dependence on imported feedstock and specialty chemicals. The domestic chemical market was valued at $220 billion in 2023, and it is expected to grow at around $400 to $450 billion by 2030 and to reach about $1 trillion by 2040 with the government support. Also, India's chemical industry currently contributes to approximately 7% of the India's national GDP. Next is DAC. DAC is your Department of Defense Acquisition Council. DAC is your Defense Acquisition Council. They have approved 1.05 lakh crore rupees indigenous defense procurement, right? That means indigenous means that the products that will be procured here, and 10 capital acquisition proposals were here. So these products, these are made in India, that are under Make in India initiative, right? They are indigenously built. Indian companies are making them, right? And they will be procured here. And take a note of this. These clearances, they will include 10 capital acquisition proposals that are worth 1.05 lakh crore rupees. For Indian Army, we will be seeing here. For Indian Army, the approvals include quick reaction surface to air missile, armored recovery vehicles. For Indian Navy, we are talking about 12 mine counter measure vessels and super rapid gun mounts. Correct? For Indian Armed Forces, for the tri-services, that is for all the 3 services, electronic warfare systems, surface to air missiles, they will be procured here. Right? So take a note of it. Moving on, India and Australia has signed a pact for joint undersea surveillance research. See, we know that Matsya 6000 was also launched. What was Matsya 6000? This is an Matsya 6000, basically a mission where this Matsya is the name of the submersible vehicle that will be going 6000 meter deep in the ocean for doing research, right? And even the humans will be going inside it. What is this? This will be promoting research in the
undersea, right? In undersea area, in oceans, we will be doing research, right? And for the same, to do undersea surveillance research, India and Australia has also signed a pact together that they will be collaborating and working on it. This contract or this partnership is for 3 years, right? Take a note of this. This partnership is for 3 years. For from Australia, it is Canberra. From Australia, it is Canberra based. Canberra is the capital of Australia. Defence Science and Technology Group DSTG from Australia, and from India it is National Physical and Oceanographic Laboratory, that is in Kochi, Kerala. Right, and here you will be seeing various products will also be developed here. Undersea surveillance capability will also be enhanced here, that will help in early detection and tracking of the submarines and the autonomous underwater vehicles. Right, take a note of this, students. Who is the Prime Minister of Australia? Anthony Albanese. Next is India has established the first WOAH recognized EDFC in Meerut, UP. What is WOAH? It is your World Organization for Animal Health. And what is this EDFC? It is Equine Disease Free Compartment. Correct. So it is India's first equine disease free compartment, that is located at the RVC Center and College. It is in Meerut Cantonment in UP. This facility will enable the international movement of India's sport horses for competitions and trades. Here you can see, right, these horses, they will be trained for various competitions for sports events, right? And also these equines, these are the animals that belongs to the family of equid, which also includes your modern horses, zebras and SS, right? Hence EDFC. So India's first WOAH recognized EDFC will be set up in Meerut, UP. This facility has been certified free from major disease that includes your or the disease that are for these equines, right? Then no infection, no influenza, no Sura disease are there at this facility, and if there is, it is treated properly. Correct. So take a note of this. Next is India rejoined the Unicode Consortium as supporting member with voting rights. What is this we are talking about is that MEITY under the government of India, they have rejoined the Unicode Consortium as supporting membership, making India one of the only two governments globally with the USA to hold voting rights in the international body responsible for standardizing the text and emoji encoding across digital platform. The membership is a part of the Technology Development for Indian Languages initiative that is aimed at promoting Indian script and enabling their digital use only. The supporting membership here will require an annual fee of up to 20,000 US dollar, that is approximately 17 lakh rupees. Also, it grants India half vote in the Unicode Technical Committee, which meets both in USA and online. And our country India through MEITY was previously a member of the Unicode Consortium from year the 2000 to 2019 and later in 2021 also. This Unicode Consortium, this is a non-profit organization that is dedicated to creating, maintaining and promoting the international or internationalization of the standards and data. Correct? Take a note of this. And this data is basically that how modern software and digital platforms will be looking. Correct? So India has rejoined the Unicode Consortium as supporting member with voting rights. Next is Union Minister of State Dr. Pemasani Chandrasekhar launched high-speed router Saksham 3000, right? This is Saksham 3000. This is high-capacity switch cum router with 25.6 terabit per second throughput at Center for Development of Telematics, that is C. campus in New Delhi. And this as question can be asked that who developed this? It was developed by C. Correct? Take a note of it. This is a state-of-the-art data center switch cum router designed for next generation digital infrastructure. This Saksham 3000, it is tailored for modern data centers that will be supporting your cloud infrastructure, 5th, 6th generation networks and artificial intelligence workloads also, which is critical in today's world. Moving on, next is SMPP. SMPP, right? They have secured 300 crore rupees Indian Army order for bulletproof jackets and helmets. So New Delhi based defense manufacturer SMPP Limited, they secured 2 emergency procurement contracts worth 300 crore rupees for the Indian Army for the supply of bulletproof jackets and advanced ballistic
helmets. The contract includes 27,700 bulletproof jackets that will be supplied here, and 11,700 advanced ballistic helmets will also be provided here. Also, the advanced ballistic helmets, they are claimed to be the world's first to offer protection against hard steel core bullets, also from AK-47 rifle also. Next is international affairs students. 4th International Conference on Financing for Development held from 30th of June to 3rd of July in 2025 in Seville, Spain. This was a 4-day long conference that brought together more than 15,000 participants, including the 50 head of states and the government. The conference is organized once every 10 years by the New York City USA-based United Nations Department of Economic and Social Affairs. Also, the conference addressed the new emerging issues and the urgent need to fully implement the Sustainable Development Goals and support the reforms of the global financial architecture. Also, the new transformative here initiative was launched, that is Resilient Remit Initiative. Right, this new initiative aims to reduce the remittance transfer cost. Correct? Take a note of it, students. So, this 4th edition of the International Conference on Financing for Development held from 30th of June to 3rd of July in Seville, Spain. Next students, EU IFAD, right? They have also recently launched the $4.26 million Resilient Remit Initiative that we just discussed. Next, Iran, they have suspended the IAEA cooperation amid the conflict with Israel and USA. This is an important and interesting development, students, right? Because we know that USA bombed the area of Iran where they were keeping the uranium or the nuclear material, right? And here Iranian President Masoud Pezeshkian has signed a law suspending their cooperation with Vienna, Austria-based IAEA, that is International Atomic Energy Agency, that is a nuclear watchdog, right? And the suspension follows the airstrike by USA and Israel between 13th of June to 24th of June, targeting the Iranian nuclear facilities in Fordo, Natanz and Isfahan. Right? These are the 3 locations where USA, they bombed the Iran sites, these 3 sites. Your homework is to tell me the name of the aircraft or bomber aircraft that was used to bomb these locations, and that is a stealth aircraft. And it is considered to be one of the most advanced aircraft in the world as of now. Next is banking and finance, students. GCF has approved $200 million for Asian Development Bank's clean energy program in India. Take a note of it. Direct question can be asked here is that recently who has approved a $200 million for Asian Development Bank's clean energy program in India? Which is that organization? It is GCF, that is your Green Climate Fund. It is South Korea based world's largest climate fund, and they have approved this $200 million, that is right, and it is for ADB led, that is Asian Development Bank led program, right, that aims to unlock the public and private investment in the high impact and emerging clean energy sectors in India. Moving on. Next students, SEBI, they have approved MobiKwik Securities to operate as a stockbroker clearing member. I repeat, Mumbai, Maharashtra based SEBI, they issued certificate of registration to Gurugram, Haryana based MobiKwik Securities Broking Private Limited, a wholly owned subsidiary of One MobiKwik Systems Limited, to operate as stockbroker and clearing member under SEBI Stockbroker Regulations 1992. Right, this certificate of registration has no expiration. That means they do not need to take that again. And starting from 1st of July 2025, the approval to carry out activities such as buying, selling and trading securities as well as clearing and settling trades have been granted to them. And the license positions MobiKwik to accelerate growth in wealth distribution space and broaden their offering throughout the capital market ecosystem. Next is economy and business, students. NSE data we are talking about. Gujarat became the 3rd Indian state to cross 1 crore stock market investors after Maharashtra and UP. Right? We know that Maharashtra as of now has the highest share of the stock investors. Right? And now on 2nd is UP, and now Gujarat has become the 3rd Indian state with the maximum number of investors, that is they have crossed the 1 crore mark in the registered stock market investors. Further, the data revealed that these 3 states, that is Maharashtra, UP and Gujarat, they hold approximately 36% of the total investor base in India.
Also, NSE data showed that the region-wise distribution of the number of registered investors, such as in North India, leads with 4.2 crore investors, followed by West India with 3.5 crore investors, South India 2.4 crore, and East India 1.4 crore. Also remember, a data students, in South India, the investors, they buy more gold as compared to that of the stock market or these securities or these stocks. Correct? Take a note of this. If we talk about Gujarat state, who is the chief minister here? Bhupendra Patel. Who is the governor? Acharya Devrat. And what is the capital? Gandhinagar. Next is NCDEX, that is your National Commodity and Derivative Exchange Limited. It is Mumbai, Maharashtra based, and they have signed an MOU with New Delhi based India Meteorological Department to launch India's weather derivatives. The strategic collaboration sets the stage for the rollout of weather derivatives designed to assist farmers and allied sectors in managing climate related risks such as irregular rainfall, extreme heat, and unseasonal weather conditions. Moving on to awards and recognition, as you can see here in the picture, she is Deepika Padukone, one of the finest actress in the Indian industry as well as globally, and she became the first Indian actress honored with the Star on Hollywood Walk of Fame of class 2026. I repeat, she was honored with the Hollywood Walk of Fame class of 2026 in the motion pictures category, making her the first ever Indian actress to receive this global recognition. Right? And this, remember one more thing, she is the first Indian ambassador for the luxury brands Louis Vuitton and Cartier also. Right? And she featured at the international events such as Cannes Film Festival, Met Gala also. Next is appointments and resignation. Sahil Kini appointed as the Chief Executive Officer of Reserve Bank Innovation Hub, that is RBI Hub. And here Sahil Kini will be succeeding whom? He will be succeeding Rajesh Bansal. Correct? Next is Sukanya Sonowal named the Commonwealth Youth Peace Ambassador. Right? So Sukanya Sonowal, the 4th year BTech student in Bioscience and Bioengineering at IIT Guwahati, was elected as the Commonwealth Youth Peace Ambassador. Right? She will lead the communication and public relation in the executive committee of the Commonwealth Youth Peace Ambassadors Network for 2025 to 2027. And this Commonwealth Youth Peace Ambassador Network, this is a youth-led initiative that spans across 56 Commonwealth member nations that is dedicated to promoting peace, respect, understanding, and countering the violent extremism. If we talk about Sukanya Sonowal, right, she has been actively involved in communication and outreach activities at IIT Guwahati, and she is also the co-founder of the STEM Vibe, that is Science, Technology, Engineering and Mathematics for Viksit Bharat Empowerment, which has engaged over 3,000 participants across India. So this is an important question. Next is environment students. New Garcinia species, that is Garcinia kusami, has been discovered in Assam recently. Right? And this new species this new species has been named in honor of Kusum Devi. Kusum Devi, the late mother of the Jitendra Sharma, a noted botanist and chairman of the Assam State Expert Appraisal Committee under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Right? So this is the new fruit bearing tree species, right, that has been discovered, and this tree can grow up to 18 meters tall. Next is state news. MP cabinet has approved Mukhyamantri Vrindavan Gram Yojana to make villages self-reliant. Right? And under the scheme, one village from each district will be selected having a minimum population of 2,000 and at least 500 cattle. The key focus of under this scheme will be including cow rearing and dairy development, environmental conservation, organic farming, water conservation, solar energy and everything. And the scheme will be funded through a 100 crore rupees allocation comprising the state budget support and also contributions from the corporate social responsibility funds. Then next is Rajasthan's Chief Minister Bhajanlal Sharma has announced Garibi Mukt Gaon Yojana to eliminate the rural poverty. Under this scheme, about 5,000 villages will be selected in the first phase with the allocation of 1,300 crore rupees to support below poverty line families. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. DRDO and Indian Navy successfully conducted the combat firing of indigenously designed Dash
with a reduced explosive payload. So DRDO and Indian Navy, they successfully conducted the combat firing of the indigenously designed multi-influence ground missile, right, with a reduced explosive payload. This system will enhance Indian Navy's defense against modern stealth ships and submarines that will offer advanced detection and engagement capabilities. Next, ATEL Africa has partnered with Space Exploration Technologies Corporation, that is SpaceX, to deploy dash low Earth orbit satellites internet service across Africa. So it is to deploy Starlink low Earth orbit satellite internet service across Africa. And this Starlink is also owned by Elon Musk. In India also, it is ATEL and Jio, with which Starlink has partnered in order to provide internet services in India. Next, Paras Defense and Space Technologies Limited, they have signed a memorandum of understanding with which company to establish a joint venture for understanding, manufacturing and supplying hydrogen powered drones in India. So they have partnered with whom? They have partnered with Heaven Drones Limited. Correct? This MOU has been signed, or this joint venture has been signed with, or this MOU has been signed between Paras Defense and Space Technologies Limited and Heaven Drones, and they will be establishing a joint venture for the hydrogen powered drones. Right? They will be first of its kind in India. If we talk about hydrogen fuel only, hydrogen powered buses has also been recently launched. They were developed by NTPC and they have been launched in Leh, Ladakh. Next, which Indian Defence PSU delivered Arnala, INS Arnala, the first of 8 indigenously developed anti-submarine warfare shallow watercraft to the Indian Navy in Kattupalli, Tamil Nadu. So, which is that organization? It is GRSC that has developed this INSSV Arnala. Moving on, identify the name of the advanced AI-based text-to-speech model that supports 11 Indian languages and that is aimed to enhance the digital voice applications launched by Sarvam AI Private Limited in May 2025. It is, what is the name of that AI-based text-to-speech model? It is Bulbul V2 and it supports 11 Indian languages. Next, mention the satellite internet service provider that received the letter of intent from the Department of Technologies, making a key step towards their commercial operations in India. It is Starlink, students. We just discussed between, and Starlink will be partnering with Jio and Airtel in India for providing the satellite internet connection in India. Next, scientists from Chinese Academy of Science, Beijing, they have launched the first ever pangenome of Asian cultivated dash by decoding the genomes of 144 wild and cultivated varieties across Asia. So, Chinese Academy of Science in Beijing, they have launched the first ever pangenome of Asia cultivated rice, right? And this was done by decoding of genome editing of 144 wild and cultivated varieties across Asia, right? A pangenome is a complete collection of a gene in rice that includes those all by shared varieties and those unique to the certain types, that helps the scientist in understanding better and improve the rice diversity. This will make it more resilient, better output will be there quantity wise also as well as quality wise also. Next, Taiwan conducted the first live fire test of which advanced artillery system supplied by USA at the Jupeng military base in Pingtung County in Taiwan. It is HIMARS or HIMARS, right? That is your high mobility artillery rocket system supplied by USA at the Jupeng military base in Taiwan. Next, in May, where did Indian Army successfully conduct a large-scale integrated field training exercise named Teesta Prahar, demonstrating operational preparedness and the seamless coordination between combat and support units of Indian Army in challenging the riverine terrain. It is West Bengal. Next, in May, India successfully conducted the trials of its indigenously developed low-cost counter-drone system by the name Bhargastra at the Seaward firing range in Gopalpur, Odisha. Take a note of this. And this Bhargastra
Bhargavastra, right? It has been developed by SDAL. What is SDAL? That is Solar Defense and Aerospace Limited. Next, identify the name of the GPS global positioning system like navigation system for the moon launched by Spanish technology company group Mecania del Vuelo, that is GMV, in May 2025, right? So a GPS on moon has been launched by GMV. Question asked is, what is the name of that GPS? It is Lupin. Lupin is the name for that system. Next, mention the name of India's fully indigenous automated air defense control and reporting system, which played a pivotal role in destroying Pakistan's aerial attacks by neutralizing and intercepting every inbound projectile during the 4-day military standoff between India and Pakistan in May 2025. Question asked is, name that India's automated air defense control and reporting system. It is Akshatir, right? So all the drones, UAVs and missiles that were launched from Pakistan towards India, it were intercepted by Akshatir, and all these things were taking place during operation by the name Operation Sindhu. Next, mention the satellite launched by ISRO aboard the PSLV C-61 from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. It is the Earth Observation Satellite 09 and it was launched using PSLV Polar Satellite Launch Vehicle C-61. Next, mention the country that launched the first batch of AI-powered satellites using the Long March 2D carrier rocket to build the world's first supercomputer in orbit. It is China. Next, identify the Indian naval sailing vessel formerly inducted by Indian Navy at Karwar Naval Base, Karnataka. What is the name of that INSV? It is INSV Conindya. Next is, in May, Aerospace Industries Limited successfully tested the India's next generation drones under the AirShield initiative, right? Take a note of this. And what are these basically? It is your one is VTOL, vertical takeoff and landing, that is AER Recon Autonomous Reconnaissance Module 5, and Aircon ARM 10 has been launched here. Next is, identify the organization operating under the CSIR that successfully completed a series of pre-monsoon flight tests for its indigenous high-altitude platform prototype, making a significant advancement in India's capabilities in border surveillance and aerial monitoring. It is National Aerospace Laboratory. This is an arm of CSIR only. Next, the USA President Donald Trump unveiled a defense plan for $175 billion Golden Dome. This is a new missile defense system which will help USA in countering the foreign missile attacks that are fired towards the USA mainland. So Trump has appointed whom as the US Space Force as lead program manager. So he appointed General Michael Guetlin as the US Force as the lead program manager for this Golden Dome. This will be similar to that of Iron Dome of Israel, and it will be costing them more than $175 billion. Next, and USA will be having it by 2029. Next is, which battery technology was developed by researchers at the Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research, Bengaluru, using the Nesicon technology that can reach 80% charge in just 6 minutes and supports over 3000 charging cycles. So which is that battery technology? It is sodium ion battery technology. Next, space startup Agnikul Cosmos Private Limited, they successfully fired the India's first electric motor driven semi-cryogenic engine, which is set to power their upcoming Agniban launch vehicle, and this is the first time an engine of this kind has been developed and tested in India. Next is, mention the rare iron potassium sulfate mineral found by the Indian researchers in the arid Kutch region of Gujarat, confirming their potential as a natural geological clock for Mars exploration. So, mention the rare iron potassium sulfate minerals that were found. Which is it? It is jarosite. This is the mineral and found here in Kutch region of Gujarat, and with this we can say that that particular area is a natural geological clock for Mars exploration, right? We can find the similarities between Kutch, Gujarat and the surface of Mars in
certain places. Next, mention the name of the company that delivered the first of 6 indigenously developed Surya very high frequency radar systems to the Indian Air Force. So which is that company we are talking about? Name that company we are talking about. Alpha Design Technologies Private Limited. They have developed these Surya very high frequency radar systems to the Indian Air Force, and they were developed with a cost of 200 crore rupees. Now students, let's move to the homework section. First is who has been appointed as the Managing Director of Hitachi India. Second question, tell me who has been recently appointed as the new Chief Executive Officer of Finance Industry Development Council, FIDC. Third question, tell me who has been recently appointed, or recently tell me there was a first edition of Khelo India Beach Games. Tell me where were they held, location, and which state secured the top position in medal tally. Fourth question, who won gold in the women's 25-meter pistol event, right? Then fifth question, tell me recently when do we observe World Football Day. So these are your homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से। नीति आयोग के द्वारा भी केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन, ये एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें इसमें बताया गया कि इंडिया के केमिकल सेक्टर को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, राइट? क्या क्या वो प्रोग्रेस हम देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, एंड हम कैसे इंडिया को एक ग्लोबल लीडर यहाँ पे पोर्ट्रे कर सकते हैं, राइट? क्या क्या प्रोसेस लगेगी उसके लिए, क्या क्या हमें इनिशिएटिव्स लाने पड़ेंगे ताकि इंडिया को एक की प्लेयर हम बना सकें ग्लोबल केमिकल मार्केट्स में। इस रिपोर्ट को BVR सुब्रमण्यम, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नीति आयोग के, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। एंड यहाँ पे इस रिपोर्ट बताती है कि इंडिया ग्लोबली 6ठे पोजीशन पे एंड एशिया में हम 3rd पोजीशन पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल्स। ये केमिकल्स हम फार्माक्यूटिकल सेक्टर्स, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए डेवलप करते हैं। ऑल्सो अगर हम देखें इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, इट स्टूड एट 3.5% विद अ केमिकल ट्रेड डेफिसिट ऑफ $31 बिलियन इन 2023। डेफिसिट मतलब इतना हम ज़्यादा इंपोर्ट हमें करने पड़ रहे हैं केमिकल्स को, हम इन हाउस उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो जो डोमेस्टिक केमिकल मार्केट है, इट वॉज वैल्यूड एट $220 बिलियन इन 2023, राइट? एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू $400 बिलियन टू $450 बिलियन बाय 2030। एंड इंडिया का केमिकल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है 7% टू द नेशनल GDP। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इनके द्वारा प्रूव किया गया कि 1.05 लाख करोड़ रुपीस की इंडिजिनियस डिफेंस प्रोक्योरमेंट, इंडिजिनियस मतलब इन प्रोडक्ट्स को इंडिजिनियसली इंडिया में ही बनाया जाएगा जो कि यहाँ पे प्रोक्योर किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इंडियन आर्मी के लिए हम प्रोक्योर करेंगे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल को, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स को। इंडियन नेवी के लिए हम प्रोक्योर करेंगे 12 माइन काउंटर मेजर वेसल्स को, सुपर रैपिड गन माउंट्स को, सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल्स को। ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोक्योर की जाएंगी, राइट? एंड ऐसे 10 टोटल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम मेड इन इंडिया हैं, उनको प्रोक्योर करेंगे जो कि इंडिजीनियसली बनाए गए हैं इंडियन कंपनीज के द्वारा, राइट? जो कि हमारी फायर पावर को, मोबिलिटी को, लॉजिस्टिक्स को, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देगा इन द डिफेंस सेक्टर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करेंगे जॉइंट अंडरसी सर्वेलेंस रिसर्च की। ये अंडरसी सर्वेलेंस रिसर्च अगर आपको याद हो तो एक मत्स्य 6000 करके सबमर्सिबल व्हीकल को लॉन्च किया गया था। ये 6000 क्या था कि 600 मीटर की डेप्थ में ये जाकर ओशंस एंड सीज में रिसर्च कर सकती है। इवन यहाँ पे ह्यूमंस को भी इसके अंदर भेजने की बात की गई फॉर कैरिंग आउट द
रिसर्च, राइट। तो सिमिलरली इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने पैक्ट साइन किया कि हम मिलकर यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, साथ मिलकर हम इनिशिएटिव्स लॉन्च करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ पे किया जा सके अंडर सी रिसर्च के ऊपर, राइट। इससे होगा क्या, जो अंडर सी रिसर्च की कैपेबिलिटीज हैं वो बढ़ती हुई दिखेंगी। डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग ऑफ सबमरीन्स एंड ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, उनके ऊपर भी काम किया जाएगा ताकि ऐसी व्हीकल्स को डिटेक्ट किया जा सके, सबमरीन्स को डिटेक्ट किया जा सके। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, एंड इंडिया की तरफ से नेशनल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी जो कि कोची केरला बेस्ड है। इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा रिस्पेक्टिव कंट्रीज से। इसके बाद आ जाते हैं, इंडिया ने स्टैब्लिश किया पहला WOAH जो कि है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रिकॉग्नाइज्ड EDFC। EDFC है इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट, जो कि कहां पर होगा, एट द RVC सेंटर एंड कॉलेज जो कि मेरठ कैंटोनमेंट में है इन यूपी। देखो ये जो आपका इक्वाइन होता है ना, ये एक स्पीशीज होती है हॉर्सेस की, राइट, जेब्रास की, एसेस की, राइट। एंड यहाँ पे बेसिकली हम देखा है कि 60 से भी ज़्यादा इनकी स्पीशीज से ही ऐसी हमें फॉसिल्स मिले हैं जो कि एक्सटेंट हो चुकी हैं इन्हीं फैमिली से जो बिलोंग करती हैं, करेक्ट। तो इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इनको ब्रीड किया जाएगा, इनको यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए ट्रेन किया जाएगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ट्रेन कर सकें, राइट। इनकी बेटर डाइट होगी, इनकी हाइजीन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, सर्वेलेंस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, एंड यहाँ पे इस एरिया को डिजीज फ्री बनाने का भी काम किया जाएगा, एंड इसके लिए इनको यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी मिला है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंडिया ने रिजॉइन किया यूनिकोड कंसोर्टियम को एज अ सपोर्टिंग मेंबर विद वोटिंग राइट्स। देखो सबसे पहले ये यूनिकोड कंसोर्टियम ये है क्या, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली क्रिएट करता है, मेंटेन करता है, प्रमोट करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को एंड डाटा को, जो कि यूज किया जाएगा कि हम कैसे मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स को एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ग्लोबली यूज करेंगे। एंड इंडिया ने यहाँ पे इसको रिजॉइन किया है इस यूनिकोड कंसोर्टियम को, एंड यहाँ पे वोटिंग राइट्स भी इंडिया को अब मिल गए हैं। MEITY जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंडिया की तरफ से इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, एंड इससे पहले हम 2000 से लेके 2019 तक यहाँ पे इसके मेंबर थे, एंड 2021 में वापस से यहाँ पे हमने ज्वाइन किया, करेक्ट। एंड वापस से अब हम 2025 में हमने ज्वाइन किया है यूनिकोड कंसोर्टियम को, एंड हमें वोटिंग राइट्स भी यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर, इन्होंने लॉन्च किया हाई स्पीड राउटर सक्षम 3000 को। ये सक्षम 3000 एक आपका स्विच कम राउटर है, हाई कैपेसिटी रहेगी, 25.6 टेराबाइट पर सेकंड का इसका थ्रूपुट रहेगा, एंड इसको CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के द्वारा, जिसका कैंपस न्यू दिल्ली में है, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया। ये एक डाटा सेंटर की तरह रहेगा जहां पे आने वाले टाइम में हम देखेंगे AI का यूज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो AI को सपोर्ट करेगा, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को ये सपोर्ट करेगा, राइट। 5G 6G टेक्नोलॉजीज नेटवर्क्स को ये सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। ये जो डिवाइस है सक्षम 3000 ये सपोर्ट करता है 32 पोर्ट्स को ऑफ 4 गीगाबिट, एंड ये फ्लेक्सिबल इथरनेट्स को भी सपोर्ट करता है फ्रॉम 1G टू 400G, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड काफी लो लेटेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, एंड स्पीड काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो सक्षम 3000। नेक्स्ट आ जाते हैं SMPP, इन्होंने सिक्योर करा 300 करोड़ रुपए का इंडियन आर्मी ऑर्डर फॉर बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड हेलमेट्स। कितनी बुलेट प्रूफ जैकेट्स, 27,700 बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड 11,700 एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट्स को यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है 300 करोड़ रुपए का SMPP लिमिटेड को। ये न्यू दिल्ली बेस्ड इंडियन इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरर है। एक और चीज, ये जो हेलमेट्स हैं एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट्स, ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि ये वर्ल्ड के पहले रहेंगे जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट AK-47 की जो बुलेट्स हैं उसके, और AK-47 राइफल से अगर कोई बुलेट फायर करती है तो ये हेलमेट्स उस बुलेट को भी रोक सकते हैं, राइट। ऐसे ये वर्ल्ड के पहले हेलमेट्स बनाने के बात की जा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे, हम बात कर रहे हैं चौथा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। यह भी 30 जून से 3 जुलाई तक हुआ सेविल स्पेन में। एम क्या रहेगा कि हम सस्टेनेबिलिटी कैसे यहाँ पे ला सकते हैं इन डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग कैसे कर सकते हैं इन डेवलपमेंट के लिए। 4 दिन का ये कॉन्फ्रेंस था जहाँ पे 15,000 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, एंड फुल्ली हम इंप्लीमेंट कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को हम सपोर्ट कर सकें। इसी के अंदर हम देखेंगे कि एक नया इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया, रेजिलिएंट रेमिट, राइट। आई रिपीट, EU
IFAD, ये EU IFAD क्या है? IFAD है आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, राइट? इनके द्वारा 4.26 मिलियन का, 1 मिलियन यूरो का एक रेजिलियंट रेमिट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिसका एम है कि जो रेमिटेंस ट्रांसफर कॉस्ट होती है ना, उसको रिड्यूस किया जा सके, जिससे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, डिजिटल इंक्लूजन बढ़ेगा एंड यूथ एंड वीमेन को सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा। इस कॉन्फ्रेंस में 8 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जैसे फ्रांस, कीनिया, बारबाडोस, स्पेन, सोमालिया, बेनिन, सियरा लियोनी एंड एंटीगुआ एंड बारबाडोआ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर ईरान, इन्होंने सस्पेंड कर दिया IAEA। IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का अभी इनके साथ कॉपरेशन, राइट? क्यों? क्योंकि इजराइल और यूएस के साथ इनका वॉर चल रहा था। फिर यूएस ने 3 जगह पर, फोर्दो, नतान्स एंड इशाफन, इन 3 जगह पर इन्होंने बॉम्बिंग कर दी एंड सबसे खतरनाक बॉम्बर से इन्होंने यहाँ पे बॉम्बिंग करी। इस बॉम्बर का नाम बताओ आप, ये होमवर्क में, एंड ये एक स्टेल्थ बॉम्बर था, राइट? एंड यहाँ पे जाके इन्होंने इन 3 लोकेशन पे बताया जा रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज थी, न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, जहां पर इन्होंने बॉम्बिंग करी। ये सारी चीजें इजराइल के साथ ईरान की वॉर लड़ते हुए क्यों दिख रही है हमें? यूएसए क्यों यहाँ पे एंटर कर रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि ईरान, चांसेस है कि ईरान यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है, राइट? एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर काम कर रहा है, राइट? जो कि काफ़ी हमारे नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर हम बोलें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का इश्यूज हो सकता है, इसलिए ये वॉर हमें बढ़ती हुई देखी, राइट? लेकिन अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सीज फायर हो गए, राइट? फायरिंग हमें नहीं देखने को मिल रही है, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब यूएस ने यहाँ पे बॉम्बिंग करी, उसके बाद ईरान ने भी यहाँ पर कतर में यूएस के बेसिस पर अटैक किया था, राइट? लेकिन आप ये समझिए कि IAEA जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि न्यूक्लियर वॉचडॉग की तरह काम करती है, ये यूएन का पार्ट है, यूएन का ही आर्म है, राइट? जब यूएस ने इनके एरियाज पे, जो इनकी फैसिलिटीज है, 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, वहां पे अटैक किया, स्टिल वे चुप रहे एंड कोई वहां पे उनका एक रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला उनकी तरफ से। इसीलिए ईरान ने सस्पेंड कर दिया अपना कॉपरेशन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन क्लाइमेट फंड है या फिर ग्रीन फंड है, जिन्होंने अप्रूव किया $200 मिलियन का लोन फॉर अमाउंट, किसके लिए? एशियन डेवलपमेंट बैंक के क्लीन एनर्जी प्रोग्राम के लिए इन इंडिया, ताकि इंडिया में हम क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर सकें, बेटर क्लीन प्रोजेक्ट्स को बना जा सके। अगर आपको याद हो तो अभी NTPC के द्वारा ही लेह लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन से फ्यूल्ड बसेस को लॉन्च किया गया, जो कि एक अनदर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, राइट? जिससे इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाएगा। एंड सिमिलरली ये अमाउंट भी इसीलिए यहाँ पे रेज किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक क्लीन एनर्जी प्रोग्राम के लिए, कि इंडिया में क्लीन एनर्जी के ऊपर काम किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए जा सके। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर आ जाते हैं, सेबी ने अप्रूव किया मोबिविक सिक्योरिटीज को टू ऑपरेट एज अ स्टॉक ब्रोकर एज वेल एज अ क्लियरिंग मेंबर। मतलब अब ये बाय कर सकते हैं स्टॉक्स को, सेल कर सकते हैं स्टॉक को, राइट? एंड ट्रेड कर सकते हैं सिक्योरिटीज में, एज वेल एज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ट्रेड्स को भी ये भी कर सकते हैं। इससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी मोबिविक में। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर स्टूडेंट्स। NSE डाटा, अब के डाटा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया, जो बताता है कि गुजरात अब वो 3rd स्टेट बन गई है जहां पे हमें 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं। पहले महाराष्ट्र था, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, फिर यूपी में देखने को मिलते हैं, एंड अब गुजरात में देखने को मिलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ स्टूडेंट्स, साउथ इंडिया में लोग ज्यादा से ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्टॉक मार्केट, राइट? फर्दर ये डाटा शो करता है कि ये जो 3 स्टेट्स हमने अभी डिस्कस करी, महाराष्ट्र, यूपी एंड गुजरात, राइट, ये 36% ऑफ द टोटल इन्वेस्टर बेस इन इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 4.2 करोड़ इन्वेस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। ईस्ट इंडिया में सिर्फ 1.4 करोड़ इन्वेस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? भूपेंद्र पटेल। गवर्नर आचार्य देवव्रत। कैपिटल गांधीनगर। इसके बाद आ जाते हैं NCDEX, जो कि है नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। इन्होंने एक MOU साइन किया न्यू दिल्ली बेस्ड इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, ताकि लॉन्च किया जा सके इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव, राइट? ये जो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन रहेगा, जो सेट करेगा द स्टेज फॉर द रोल आउट ऑफ वेदर डेरिवेटिव्स, राइट? असिस्ट करेंगे फार्मर्स को, अलाइड सेक्टर्स को इन मैनेजिंग द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क सच एज इरेगुलर रेनफॉल, एक्सट्रीम हीट एंड अनसीजनल वेदर कंडीशंस। तो NCDEX ने MOU साइन किया IMD के साथ, तो इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव को लॉन्च किया जा सके, एंड इंडिया का पहला इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव भी लॉन्च करने की बात की गई थी, राइट?
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अवार्ड्स एंड रिकग्निशन पे। दीपिका पादुकोण, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। ये वो पहली इंडियन एक्ट्रेस बन गई जिनको ऑनर किया गया हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 से। टेक अ नोट ऑफ दिस इन द मोशन पिक्चर्स कैटेगरी, एंड ये पहली एक्ट्रेस बन गई है टू रिसीव दिस ग्लोबल रिकॉग्निशन। एक और चीज इसके अलावा, ये वो पहली एम्बेसडर भी बनी थी, पहली इंडियन एम्बेसडर फॉर द ब्रांड सच एज लुई विटॉन एंड कार्टियर। इनको रिकॉग्नाइज भी किया गया था टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन 2018। देन केन्स फिल्म फेस्टिवल एंड मेट गाला में भी इनका फीचर हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे स्टूडेंट्स। साहिल किनी, इनको अपॉइंट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, आरबीआई हब के साहिल किनी अपॉइंट किए गए हैं, जो कि को फाउंडर हैं सेतु के। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे राजेश बंसल को। नेक्स्ट आ जाते हैं सुकन्या सोनोवाल, इनको नेम किया गया कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर के तौर पे, राइट। ये सुकन्या सोनोवाल ये 4th ईयर बीटेक स्टूडेंट्स है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं इन इनिशिएटिव्स में। इनके द्वारा स्टेम वाइब को भी लॉन्च किया गया था, जो कि है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फॉर विकसित भारत एम्पावरमेंट, जहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला था, राइट। एंड आईआईटी गुवाहाटी में भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है फॉर आउटरीच एक्टिविटीज़ एंड इन कम्युनिकेशन, एंड एक्टिवली इन्वॉल्व रहती हैं इसमें। एंड इन्हीं को यहाँ पे ये लीड करेंगी कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन को इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क फॉर 2025 से 2027 टर्म के लिए। एंड ये जो इनिशिएटिव है कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क, ये एक इनिशिएटिव है जो कि यूथ लेड है, जहाँ पे 56 कॉमनवेल्थ मेंबर नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे, डेडिकेट करेंगे प्रमोटिंग पीस को, रिस्पेक्ट को, अंडरस्टैंडिंग को, एंड कैसे हम वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो कि टेररिज्म है उसको रोका जा सके, उसके ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर एनवायरनमेंट के ऊपर। नई गार्सिनिया स्पीशीज जो कि है गार्सिनिया कुसामे, इसको डिस्कवर किया गया असम में। ये एक नई फ्रूट बियरिंग ट्री स्पीशीज है, एंड ये जो डिस्कवर की गई है कहाँ पे? इन द बायोडाइवर्स फुटहिल्स ऑफ असम का बक्सा डिस्ट्रिक्ट में, राइट, जो कि क्लोज है टू मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। सो टेक अ नोट ऑफ इट। एंड ये जो यहाँ पे इनिशिएटिव है, बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे ये जो ट्री, सॉरी नॉट इनिशिएटिव, ये जो नया ट्री है फ्रूट बियरिंग ट्री, ये 18 मीटर हाइट तक भी ग्रो कर जाता है, एंड काफ़ी ब्राइट एंड पिंकिश ऑरेंज फ्रूट रहता है इसका, राइट। सो टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड कुसामी बेसिकली याद रखेंगे कुसुम देवी, राइट। ये लेट मदर है ऑफ जितेंद्र शर्मा, जो कि एक नोटेड बोटानिस्ट थे एंड चेयरमैन ऑफ असम स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। उनकी नेमिंग के बिहाफ पे इसका नेमिंग की गई। फिर आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को, ताकि विलेजेस को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। इस स्कीम के अंडर हर डिस्ट्रिक्ट से एक विलेज को चूज किया जाएगा, जहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन 2000 होनी चाहिए एंड एटलीस्ट 500 कैटल्स वहाँ पर होनी चाहिए। एंड इनको, इन विलेजेस को वृंदावन ग्राम्स के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जिनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने का काम किया जाएगा। वहीं पर हम देखेंगे काउ रियरिंग, डेयरी डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन, सोलर एनर्जी, पेस्ट डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर काम किया जाएगा। एंड ये जो स्कीम है इट विल बी फंडेड थ्रू 100 करोड़ रुपीस एलोकेशन, जो इस फंड के लिए लॉन्च किया गया, जो कि कंट्रीब्यूट करेंगी स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के थ्रू बाय वेरियस एमएनसीज। इसके बाद आ जाते हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा जी ने अनाउंस किया गरीबी मुक्त गांव योजना को, जो कि एलिमिनेट करेगा रूरल पॉवर्टी को। अंडर दिस स्कीम 5000 विलेजेस विल बी सिलेक्टेड इन द फर्स्ट फेज एंड अलोकेट किया जाएगा 1300 करोड़ रुपए टू सपोर्ट द बीपीएल फैमिलीज, बिलो द पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। ये जो इनिशिएटिव है ये एक फ्लैगशिप पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम रहेगा राजस्थान का। एंड इसके अंदर हम देखेंगे जो बीपीएल फैमिलीज हैं, राइट, एंड जो फैमिली जिन्होंने सक्सेसफुली राइज किया अबव पॉवर्टी लाइन थ्रू देयर ओन एफर्ट्स, वो 21,000 रुपए भी उनको यहाँ पे दिए जाएंगे एज इंसेंटिव, करेक्ट। इसके अंदर आत्मनिर्भर परिवार कार्ड को यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसके अंदर ये इनिशिएटिव और इनके अंदर ये जो फंड है, राइट, जो लोगों को एक ग्रीवियंस है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, राइट, उनको फंडिंग के तौर पे प्रोवाइड कराया जाएगा। इवन जो वीमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, राइट, वो एलिजिबल होंगे यहाँ पे फॉर अ वर्किंग कैपिटल सपोर्ट, ताकि वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को ग्रो कर सके। एंड 15,000 रुपये पर फैमिली उनको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी इन्होंने कंडक्ट किया कॉम्बैक्ट फायरिंग ऑफ इंडिजीनियसली डिजाइंड, क्या टेस्ट किया गया है? मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन को यहाँ पे टेस्ट किया गया है विद रिड्यूस्ड एक्सप्लोजिव पेलोड। नेक्स्ट आ जाते हैं
एयरटेल अफ्रीका, इन्होंने पार्टनर किया स्पेसएक्स के साथ टू डिप्लॉय स्टारलिंक सैटेलाइट इन अफ्रीका, राइट। ये इंटरनेट सर्विसेज है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो स्टारलिंक लॉन्च करने के लिए एयरटेल एंड जियो के साथ पार्टनर किया गया ताकि ये दोनों मिलके स्टारलिंक के साथ यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड कराए सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं पायरस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, इन्होंने एक एमओयू साइन किया हेवन ड्रोन्स लिमिटेड के साथ एंड ये दोनों मिलके एक जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश करेंगे ताकि हाइड्रोजन पावर्ड ड्रोन्स के ऊपर काम किया जा सके इन इंडिया, राइट। इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन पावर्ड बसेस की, ये भी अभी इंडिया में लॉन्च की गई हैं। कहाँ पे लॉन्च की गई? लेह लद्दाख में लॉन्च की गई। एनटीपीसी के द्वारा इनको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस इंडियन डिफेंस पीएसयू ने डिलीवर किया अरनाला को, जो कि फर्स्ट ऑफ द 8 इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है टू द इंडियन नेवी। इसको डिलीवर किया गया इन कटुपली तमिलनाडु। तो कौन सा है वो है जीआरएससी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एडवांस्ड एआई बेस्ड टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल जो सपोर्ट करता है 11 इंडियन लैंग्वेजेस को दैट आर एम्ड एट एनहांसिंग द डिजिटल वॉइस एप्लीकेशंस लॉन्च्ड बाय सर्वम एआई प्राइवेट लिमिटेड इन मई 2025। तो उसका नाम है बुलबुल V2। ये 11 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है ये एआई मॉडल। नेक्स्ट मेंशन द सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिन्होंने रिसीव किया एक लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि एक की स्टेप है टुवर्ड्स कमर्शियल ऑपरेशंस इन इंडिया। हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, ये है स्टारलिंक। नेक्स्ट साइंटिस्ट फ्रॉम चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस बीजिंग, इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट एवर पेंजियम ऑफ एशियन कल्टिवेटेड राइस को, राइट, जो कि डिकोड किया गया है बाय द जीनोम्स ऑफ 144 वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड वेराइटीज अक्रॉस एशिया। ये बेटर होगा आपका, इससे हीट रेजिस्ट टेम्परेचर रेजिस्टेंट होगा, बेटर आउटपुट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। नेक्स्ट ताइवान ने कंडक्ट करा फर्स्ट लाइव फायर टेस्ट ऑफ विच एडवांस्ड आर्टिलरी सिस्टम, जो कि सप्लाई किया गया बाय यूएसए एट द ज्विपिंग मिलिट्री बेस इन पेंगटुगुंग काउंटी ऑफ चाइना। तो ताइवान ने कंडक्ट किया फर्स्ट लाइव फायर टेस्ट किस चीज़ का? ये था आपका हिमर्स का, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस, ये है हिमर्स से आपका हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम एंड ताइवान को डिलीवर किया गया बाय यूएसए, राइट, बिकॉज ऑफ द राइजिंग टेंशन जो पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं। नेक्स्ट वेयर डिड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंडक्ट अ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड फील्ड फायरिंग एक्सरसाइज, तीस्ता प्रहार जो हमें देखने को मिली। तो ये तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज वेस्ट बंगाल में हुई थी। इंडियन आर्मी के द्वारा ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा ट्रायल्स ऑफ देयर इंडिजीनियसली डेवलप्ड लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम जिसका नाम है भगवस्त्रा, राइट, एट द सीवर्ड फायरिंग रेंज इन गोपालपुर ओडिशा। SDAL के द्वारा इसको डेवलप किया गया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द GPS लाइक नेविगेशन सिस्टम जो कि मून के लिए डेवलप किया जा रहा है। स्पेनिश कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है, GMV कंपनी का नाम रहेगा। इसका नाम क्या है जो मून पे GPS लॉन्च किया जाएगा? तो वो है ल्यूपिन। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ इंडियाज फुल्ली इंडिजीनियस ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम दैट प्लेड अ पाइवटल रोल इन डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान का एरियल अटैक्स। यहाँ पे 7 जगह पे इंडिया के द्वारा अटैक किए गए थे। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर, राइट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेंशन द नेम ऑफ इंडियाज इंडिजीनियसली ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, राइट। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने वापस इंडिया पे UAVs, ड्रोन्स, मिसाइल से जब अटैक किया तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए जो इंडिया का सिस्टम था उसका क्या नाम है? वो है अक्षतीर। ये पूछा गया और उस ऑपरेशन का जो इंडिया ने लॉन्च किया था वो है ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट मेंशन द सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो यूजिंग PSLV C61 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 ये वो सैटेलाइट का नाम है जो कि इसरो के PSLV C61 के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट मेंशन द कंट्री जिसने लॉन्च किया फर्स्ट बैच ऑफ AI पावर्ड सैटेलाइट्स यूजिंग लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट, राइट, टू बिल्ड द वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर ऑर्बिट में ही, राइट, सुपर कंप्यूटर बनाने का काम किया जाएगा। यहाँ पे कौन कर रहा है? ये चाइना के द्वारा करा जा रहा है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इंडियन नेवल सेलिंग वेसल फॉर्मली इंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी एट करवार नेवल बेस कर्नाटका। तो क्या नाम है उस INSV का?
वो है INSV कौन इंडिया। नेक्स्ट, एयरस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स को अंडर द एयरशील्ड इनिशिएटिव। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अंडर CSIR, जिन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया सीरीज ऑफ प्री मॉनसून फ्लाइट टेस्ट फॉर देयर इंडिजीनियस हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप, जो कि एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है इंडिया की कैपेबिलिटीज़ में इन बॉर्डर सर्वेलेंस एंड एरियल मॉनिटरिंग। तो वो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये CSIR का ही नाम है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इनके द्वारा ये टेस्ट कंप्लीट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर अभी USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक डिफेंस प्लान अनवेल किया, $175 बिलियन का ये प्लान रहेगा फॉर गोल्डन डोम। गोल्डन डोम क्या है? ये सिमिलर है आपका आयरन डोम जैसा, जो कि इसराइल का है, जो कि इनकमिंग थ्रेट्स को, मिसाइल्स को, UAVs को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो सिमिलरली USA की मेनलैंड की तरफ जब कोई मिसाइल या ड्रोन आएगा तो उनको न्यूट्रलाइज करने का ये गोल्डन डोम काम करेगा। 2029 तक ये बन के रेडी हो जाएगा। $175 बिलियन यहाँ पे खर्च होंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, राइट, इन्होंने अपॉइंट किया किनको ऑफ US स्पेस फोर्स एज द लीड प्रोग्राम मैनेजर। तो माइकल ग्वेटलिन यहाँ के लीड प्रोग्राम मैनेजर अपॉइंट किए गए हैं फॉर दिस गोल्डन डॉम। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैटरी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था रिसर्चर्स के द्वारा एट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च, जो कि बेंगलोर में है, यूजिंग नेसिकॉन टेक्नोलॉजी, जो कि 80% चार्ज कर सकती है बैटरी खुद को 6 मिनट के अंदर एंड 3000 चार्जिंग साइकिल्स तक ये ऑपरेट कर सकती है। तो ये है सोडियम आयन बैटरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने सक्सेसफुली फायर किया इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन को टू पावर द अपकमिंग अग्निबाण लॉन्च वीक। इसके बाद आ जाते हैं, मेंशन करो उस रेयर आयरन पोटेशियम सल्फेट मिनरल का जो कि इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा कच्छ रीजन में फाइंड किया गया ऑफ गुजरात, जो कि नेचुरल जियोलॉजिकल क्लॉक है फॉर मार्स एक्सप्लोरेशन। मतलब जैसा यहाँ पे वो इन्वायरमेंट हमें जो मटेरियल मिनरल्स देखने को मिले, सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल मिनरल्स हमें मार्स की सरफेस पे देखने को मिलते हैं, जो कि वहाँ पे रिसर्च करने के लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट बनाता है कच्छ गुजरात को, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी हमें मार्स पर देखने को मिलेंगे। तो क्या देखने को मिला है यहाँ पर हमें कच्छ में? ये है जेरोसाइट, राइट, जो कि आयरन पोटैश सल्फेट मिनरल है। Now students, let's move to the homework section. First is, who has been appointed as the managing director of Hitachi India? Second question, tell me who has been recently appointed as the new chief executive officer of Finance Industry Development Council, FIDC. Third question, tell me who has been recently appointed, or recently tell me there was a first edition of Khelo India Beach Games. Tell me where were they held, location, and which state secured the top position in medal tally. Fourth question, who won gold in the women's 25-meter pistol event, right? Then fifth question, tell me recently when do we observe World Football Day? So these are your homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video.